পুজোর ছুটি মানেই আনন্দের সময়, বন্ধু বা পরিবার নিয়ে লম্বা ছুটি কাটানোর দিন। আর এই সময় ভ্রমণ পিপাসুরা প্রিয়জনদের নিয়ে ঘুরে ফেলতে চান অজানা জায়গা। ভ্রমণ পিপাসুদের জন্য এবার সুখবর, পুজোর প্রাক্কালে শুরু হয়েছে ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ফেয়ার। 3 দিনের এই পর্যটন মেলায় অন্যতম আকর্ষণ সিকিম ট্যুরিজম। সোরেং তাদের এবার নতুন যাত্রাপথ, তাই সিকিমের ভৌগোলিক সৌন্দর্য আরও সুন্দর করে তুলতে তাদেরই প্রয়াস। এদিন আদিত্য গোলে, রাজকুমারী থাপা, রাজ বাসু, দেইকি রিয়াংছেন, দোলকার গেস্ট, সুদেশ কুমার, সুভাষ সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনের আসেন এই মেলার প্রধান অতিথি হয়ে। তারা তুলে ধরেন পর্যটকদের সিকিম কেন এত পছন্দের। যারা বেড়াতে যাবেন ভাবছেন, তারা একবার ঢু মারতেই পারেন টিটিএফ আয়োজিত সিকিম ট্যুরিজমের আউটলেটে। I want to say that we are very happy to be here in the TTM 2025 edition, and Sikkim has got the opportunity to present or showcase our tourism industry in the TTF 2025. We are very happy and we are very much indebted to Fairfax Media for having this opportunity. We just want to say that we want to invite each and everyone to Sikkim. Sikkim is very beautiful, very fragile land. Anyone can experience the different forms of tourism, either it may be ecotourism, forest tourism, adventure tourism, or sustainable agriculture or traditional farming. We have lots of homestays, hotels, restaurants, and we are surrounded by beautiful natural landscape along with mountains. Mount Kanchenjunga is in Sikkim, and under the dynamic leadership of our Honorable Chief Minister Prem Singh Tamang, we are always committed to promote tourism. Sikkim's people are very much hospitable nature. Each and everyone has a welcoming nature to tourists. So we invite each and everyone to Sikkim, explore Sikkim, visit Sikkim, and have a good stay in Sikkim. Okay, so we are here at the TTF Kolkata to try and promote new destinations from Sikkim. One being Soreng and one being Yangyang. So Soreng, we are a culmination of 4 constituencies: Dharamdin constituency, Rinchipur constituency, Zoom Salgari constituency, and Soreng Chakhung constituency. So right now, the government of Sikkim, we are trying to develop a lot of new touristy places for the tourists to come and visit these new places as well. So in Dharamdin constituency, the government of Sikkim, they are developing the Vrindavan Dham. It is a very big project. It is, I think, almost about 300-400 crore project which is being developed and will be inaugurated by the, I think this year, at the end of this year. And there is another project, Swargajani Siri, the Stairways to Heaven project, that is also being developed at Dharamdin, that is also a Soreng district. And at Zoom Salgari constituency, the government of Sikkim, they are making a wonderful peacock park that is being made, and I think that will be completed by this year end. I think December, January, we'll be inaugurating that asset as well. And at Rinchipur constituency, the new Rabindranath Tagore Park, that is being developed. So I think that will also be done by this coming year, 2026. And at my own constituency, which is Soreng Chakhung constituency, we are developing various new destinations like the Jhandidara. It is a beautiful place where the entire Kanchenjunga peak can be like seen in its fullest glory. So we are trying to develop that. We are trying to make a very beautiful viewing deck where the sunrise can be seen from there. We are trying to take the new ropeway from Singling to Jhandidara, from Jhandidara to Vrindavan Dham. So we are trying to take that also, and we are trying to recently the government of Sikkim and obviously the Honorable Chief Minister, he has sanctioned this LD Kazi Adventure and Cultural Park as well. So we are making all those things in Sikkim. So I'd like to obviously request everybody to please come and visit these places along with the other existing places of Sikkim as well. पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए प्रचार प्रसार के लिए। तो हम सिक्किम से, मैं डेप्यूटी स्पीकर सिक्किम डिस्ट्रिक्ट असेंबली एंड डिस्ट्रिक्ट मेंबर फॉर क्रिस्टियन रानी कॉन्स्टिट्यूंसी नामची डिस्ट्रिक्ट सिक्किम, और मेरे साथ में पॉलिटिकल सेक्रेटरी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम श्री विकास भोसले। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कन्वे माई वार्म gratitude to Press Media for organizing this wonderful TTF Kolkata 2025.
also I would like to convey my warmest gratitude to our honorable beloved honorable Chief Minister Government of Sikkim, Sirpan Singh Tamang, for this golden opportunity for all of us. और मैं इस मीडिया के मार्फत ये कहना चाहती हूँ, सिक्किम एक बहुत ही सुंदर राज्य है, स्टेट है, और जो सिक्किम में आप विजिट करने के बाद जो एक्सपीरियंस गेन करते हैं वो अन्य स्टेट में वैसा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो नेचुरल ब्यूटी है सिक्किम का, वो सिक्किम आने से आप सिर्फ देख नहीं सकते, उसको फील करने से आप नेचुरल ब्यूटी ऑफ सिक्किम का वो उसका जो एसेंस है वो आप उसका फ्लेवर से वो आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ में वहाँ का जो इन्वायरमेंट है और टूरिज्म, इको फ्रेंडली टूरिज्म ज़्यादा है, कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म से, जिसमें कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशंस और हेरिटेज, जो सिक्किम एक ऐसा स्टेट है कि वी हैव अ वेरी रिच कल्चर, ट्रेडिशंस एंड हेरिटेज, एंड वी वांट टू प्रिजर्व दैट वन also, and we want to give authentic cultural experience to all the visitors apart from Sikkim, our state, and we'd like to welcome and we offer pure, very warm environment to all the visitors, especially TTH में जितने भी आए और जितने भी लोग ये देख रहे हैं, अगर आप सिक्किम नहीं आए हैं तो प्लीज़ एक बार आप आ जाइए। एक बार आने से आपको बार बार आने का मन करता है, ऐसा हमारा स्टेट है। और सिक्किम आने के लिए हमारे कंस्टिट्यूंसी में साउथ एशिया के सबसे हाईएस्ट स्काई वॉक अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें पहुंचने के लिए जो हाईएस्ट रोपवे है धप्पर टू भालीडुंगा, यह अभी कंप्लीट हुआ है। एक ही साथ में आप विभिन्न प्रकार के टूरिज्म एक्सप्लोर कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 10।